Namaskar, viewers. Once again, today is a health question program, and it's my honor and privilege to welcome Dr. Shivam Pandya. Fondly, people call him Shivam Da, and he's from Ahmedabad, Gujarat, and a surgical oncologist. And he is not only a doctor, but he likes to write a lot about his profession as well as many other topics. So he's specialized in head and neck cancer related issues. So personally, I am also very curious to know what all it covers and how it is treated, and also the treatment course and the other precautions and other information that a layman would like to know. We are not going to use any medical terminologies as much as possible because it is purely for people like me who are not from medicine background, what they should be, taking into consideration if at all they come across such kind of complications. So let me first of all formally welcome Dr. Shivam. So Swagatam. Namaste. Um, Doctor, first come first. Oncology is a very common term, and the moment somebody comes across cancer, it becomes a big jolt to the not only to the patient but the entire family as well. So, what I want to understand is, what is the percentage of this particular carcinoma related thing in India? Oral cancers, as such, percentage wise, if we say that thing always keeps on changing, but oral cancer is one of the most common cancers in India, probably the most common cancer, especially in males. So in females, breast cancer is more common, but in Yes. males, oral cancer is far, far more common. And we have something called a cancer belt in India, what we call, because most of the incidence is from these regions. Bihar, UP, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, but these are the areas where we have more prevalence going on. So that is how it is. So we will be talking on oral cancers today. First of all, oral cancer, matlab kya? What does oral cancer mean? So oral cavity as such extends from your lips, the tongue, the inside of the cheeks, which we call the buccal mucosa, the part which is above the cheeks, the palate. It is the hard palate, and behind it something called the soft palate. Then if we go down, there is the tonsils. So all that area comprises under the oral cavity. Now, if you go below that, you have your voice box, which is the larynx, and then you have the pharynx where you can swallow. So it's not the part of oral cavity, but it's still it is covered under head and neck, and we can call it like one common organ unit because cancer in one part increases the risk of recurrence in cancer in the other parts. Okay. This is something called a field cancerization. Okay, that's a separate topic. Anyway, so talking of oral cancers, as I said previously, it is one of the most common cancers in India, if not the most common, especially among males. So why does this happen? Biggest three reasons: tobacco, cigarette, and alcohol. Tobacco chewing in the form of gutka or pan masala, cigarette or BD, smoking, and alcohol. So these three are the different modalities which can cause cancer. The three of them work synergistically. They work as a team. वो साथ में काम करते हैं to ensure that the person who consumes them will definitely have cancer. So this tobacco, alcohol, and cigarette, biggest reasons of oral cancer in India. And sadly, it is only rising. It's only rising. Despite multiple awareness camps or de-addiction camps, it is still rising because people cannot stop. And then we have celebrities who are endorsing it. So it is still rising. Also, so what can be done about it? No, before that. First, yes, ma'am. Before that. Does it, the percentage vary rural and urban wise, or it is the same? There is no study as such that I can recall where rural versus urban was done, because we are like sitting in an urban area. So patients are coming from the rural areas to us. So for that, we need quite a big study to understand. But then again, the prevalence of gutka chewing, I don't think is different from the rural versus urban from what I have seen so far.
Okay, so what can be done about it? So let's talk about early detection. Yes, sir. Okay, someone you know tells you that they have an ulcer. एक मुंह में जख्म है जो ठीक नहीं हो रहा. Okay, so that is a sign that it might be a cancer. Does not mean that it is. It might be. That ulcer starts getting hard. It bleeds. It is painful. You have pain in the ear or the pain on the head, like a headache. You have earache, and these are the alert signs. You have to be alert when these things come because this is a sign of cancer. Okay. Any neck swelling, any lump in the neck can be another sign that you have to go and show to your doctor. Okay. So sometimes there is no cancerous lesion found inside the oral cavity, but the neck has a huge lump. So you have to go to the doctor for that. So किस डॉक्टर को दिखाना है? The biggest problem what what I have seen with patients is that why they come late to us is there is a lack of awareness. उनको अगर पता भी है कि कैंसर, उनको ये नहीं पता कि किसको दिखाना है. So किसको दिखा सकते हैं? A good general practitioner, a good dentist, a good ENT surgeon, a surgical oncologist, and a good general surgeon, a good surgical oncologist, and a good general surgeon. These are the doctors की जिसको ये आप सबसे पहले दिखा सकते हो, because they will do the initial evaluation and then they will refer to the surgical oncologist or to whoever who is the treating doctor. Okay, इस चीज में देरी नहीं करनी है. डॉक्टर के पास दिखाने में डरना नहीं है. जी. In this context, any lump is not necessarily cancerous tumor. No. Every lump is not necessarily cancer. सबसे बड़ी चीज. So every lump is not necessarily cancer. It can be cancer. It cannot be. There are more non-cancerous pathologies compared to cancer. Okay, you can simply have a boil in your scalp, and that can present as a nodal swelling in the neck. So if I sit down and I palpate 1000 necks, I'll find maybe 500 to 600 with some form of a swelling. But not everybody is cancer. Most of them is just normal. If you have a lot of like severe dandruff problem, lot of boils, you can have a nodal swelling here in the neck. Very common. You can have a tubercular swelling. We recently had a case, patient was coming with us with a huge neck nodal mass, and then upon history, we found that she has a history of TB in the family. So instead of going towards the oncological management, we shifted her to the tubercular management. She had a very recent history of TB in the close family. So again, it can be TB. Now there are some lumps which are not cancer, but which are not completely normal also. Okay, so they are, we call them locally aggressive. So they're benign tumors, but they keep on increasing in size slowly. So they also have to be removed. So not all lumps are cancer and not all cancers are same. Always keep this in mind. Right. So if you have a lump in the neck, don't ask Google that what will I have if there is lump in the neck, because Google cannot examine you. Google cannot take your history. Go to the doctors, which I mentioned, GP, dentist, general surgeon, ENT surgeon, surgical onco. Go to them. They will tell you. Okay. So moving forward, what are the treatment options? Now you have a cancer. The biggest doubt that the patient has ki ab kya hoga? Will I survive? I have patients who come with a biopsy report and say, doctor, how many years have I got? I said, you have a lot of years. Shanti. Why? Because there are a lot of treatment options. अब पहले जैसा नहीं रहा कि कैंसर है मतलब it is death. Cancer does not equate to cancel anymore. Okay. You come in with an early disease, you get operated, you complete your therapy, and you can live your normal life. So what are the treatment options? In any oncology, we have 3 treatment options. First of all, surgery. Yes. Second, radiotherapy. Yes. Third, chemotherapy. Yes. So in head and neck, the most common and the one with the best curative chance is surgery.
If the lesion can be excised, can be removed, then it's the best. Okay. Surgery with some form of a plastic surgical reconstruction. So when we remove a part of the jaw, we remove the part of the cheek, we have to replace it. So we replace it with some form of a plastic surgery. If we go into the details of that, it will be completely different discussion. So let's not go there, but then there are different forms of flaps which we can use for that. And जितना बड़ा सर्जरी होगा उतना बड़ा फ्लैप होगा, उतना थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा होगा. So smaller lesions will definitely have a better results. We have some patients, मेरे पास फोटोज भी हैं उनके. If you look at them, you will not realize that इनका कैंसर का, ओरल कैंसर का सर्जरी हुआ है. तो छोटा लीजन में ये एक एडवांटेज होता है छोटा डिसीज में. बड़ा डिसीज है तो इट हैज इट्स ओन ड्रॉबैक्स. अनदर इज रेडियोथेरेपी. नाउ रेडियोथेरेपी मतलब क्या, सबसे बड़ा डाउट रहता है सबको कि रेडियोथेरेपी मतलब क्या देंगे, रेडिएशन मतलब क्या. अगर हम ऐसे समझे, इट इज लाइक अ बंच ऑफ एक्सरे. एक्सरे जो हम लेते हैं ना, बहुत सारे एक्सरे फोकस किया जाता है. So bunch of X-rays are focused on a disease. Now there are different modalities of radiotherapy also. Again, if we go into that, it will become a very different discussion. But there are many different modalities of radiotherapy. तो ऐसा नहीं है कि आज से 20 साल पहले किसी रिलेटिव को आपने देखा कि रेडिएशन के बाद इतना कॉम्प्लिकेशन हुआ, आज भी वैसे होगा, ऐसा नहीं है. The technology has evolved, the management has changed. So radiation दो टाइप के हम देते हैं. एक होता है क्योरेटिव रेडिएशन. क्योरेटिव रेडिएशन मतलब क्या, कि हम ऑपरेट नहीं करेंगे, सिर्फ रेडिएशन से उसको ठीक करेंगे. सो व्हेन डू वी डू दिस, व्हेन द कैंसर, द ट्यूमर कैन नॉट बी एक्सेस्ड वाया सर्जरी. इफ इट इज डीप इन द नेक, you try to remove it, is more complicated. So instead of that, what we do, we just radiate the patient and the disease completely disappears. Oh, I thought if you are in a stage 1 or something, that time the radiation is used. Stage up to stage 3 you can use radiation, and if it is very bulky, if it is very advanced, then we cannot. Yeah, to operate. And another is adjuvant. Adjuvant मतलब क्या, सर्जरी के बाद हमने सर्जरी कर दिया. So very important, जब हम सर्जरी करते हैं, one thing we tell the patient when they come back is कि आपको रेडिएशन आएगा और आपको रेडिएशन लेना है. What people think, ऑपरेशन हो गया, कैंसर निकल गया, अब आगे क्या फायदा रेडिएशन लेके, ऐसी बात नहीं है. When we operate, जब हम ऑपरेट करते हैं, हम जो दिखता है उतना कैंसर निकालते हैं, बट बाकी का जो फील्ड है उसमें अभी भी माइक्रोस्कोपिक सेल्स हो सकते हैं जो हमको नहीं दिखते, और जो बाकी का फील्ड है इट इज ऑल्सो प्रोन टू कैंसर. अगर आपको याद हो, मैं पहली लाइन बोला था कि ये एक पूरा सिंगल यूनिट है. तो एक जगह कैंसर दूसरी जगह का रिस्क देता है. सो योर रेडिएशन विल स्टेरिलाइज दैट होल फील्ड. पूरा फील्ड को वो साफ कर देगा. That is why it will reduce the chance of a recurrence. Okay. So that is adjuvant. Ji. Right. Now I have a question. Like, just now you explained the areas which come under head and neck. If somebody has a nostril region, there is some sort of a lung or sinus kind of discomfort. What kind of symptom which they should think that, mostly due to allergy, we go through a lot of discomfort in this area, especially people from the metropolitan cities. Now, as you rightly said, always it is not a cancerous situation, but then by the time I realize and I approach the doctor, it is not like too late situation. So I want to understand, how do they identify that this is something they need to worry about? Early sinus tumors are actually very incidental findings. So you have, the symptoms are very common. Stuffy nose, you have pain in the eyeball, behind the eyeball, you have headaches. So ये आपको simple sinus के भी symptoms यही होते हैं. So क्या होता है कि, लेकिन these symptoms do not go away with treatment. Generally sinus अगर होता है तो वो nasal decongestant लगाते हैं, tablets लेते हैं, generally ठीक हो जाता है कुछ दिनों में, 3-4 दिन में. If this does not go away,
then it's a sign of something else, and then you have to consider some imaging, CSCT or an MRI, something like that. So lot of early sinus lesions are picked up like this. Patient को chronic symptom में ठीक नहीं हो रहे हैं, एक MRI कराया, पता चला अंदर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का छोटा सा ट्यूमर है, वैसा. So that's how it happens. Okay. So coming to the two arms we have talked: surgery, radiotherapy. The third one is chemotherapy. अब कीमोथेरेपी जनरली लोगों को लगता है कि कैंसर मतलब कीमो ही देना. हेड एंड नेक एक्चुअली कीमो डज नॉट हैव अ थेरेप्यूटिक रोल. मतलब कीमोथेरेपी जनरली रेडियोथेरेपी के साथ में दिया जाता है टू इंप्रूव द इफेक्ट ऑफ रेडियोथेरेपी इटसेल्फ एंड टू इंप्रूव द इफेक्ट ऑफ द थेरेपी एज द होल. सो ऑन इट्स ओन कीमो का अकेला कोई रोल नहीं है, एक्सेप्ट देयर इज समथिंग कॉल्ड अ पैलिएटिव कीमो. पैलिएशन मतलब क्या? ये मैंने अभी तक जो मैंने बोला वो ये था कि क्योरेबल कैंसर्स की ग्रोथ है, लेकिन आप निकाल सकते हो, आप उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो. तो आप निकालो, रिकंस्ट्रक्ट करो, रेडिएशन दो, कीमोथेरेपी दो उसके साथ में, वो पूरा. लेकिन इफ देयर इज अ डिसीज विच यू कैन नॉट रिमूव, हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं फ्रॉम रूरल एरियाज या कहीं से जो निग्लेक्ट किया हुआ है उन्होंने, और दे हैव नॉट टेकन प्रॉपर ट्रीटमेंट. द डिसीज इज सो एक्सटेंसिव कि हम कुछ भी नहीं कर पाते उसमें. सो इन दैट केस वी सेंड द पेशेंट्स फॉर समथिंग कॉल्ड अ पैलिएटिव थेरेपी. पैलिएशन मतलब कि हम डिसीज को क्योर नहीं कर रहे हैं, हम उसको बस कंट्रोल में रख रहे हैं, सो दैट रैपिडली बढ़े नहीं एंड पेशेंट को थोड़ा लाइफ स्पान ज्यादा मिल जाए. सो यू हैव रेडिएशन भी पैलिएटिव सेटिंग में देते हैं, कीमो भी देते हैं, लो डोज में देते हैं, लेकिन सो दैट पेशेंट कैन ऑल्सो टॉलरेट. और एक पैलिएटिव केयर होता है कि जहां पे पेन किलर के मेडिकेशन और वो, सो ऑल ऑफ दिस इट्स अ टर्मिनल केयर. ये सब मेंटेनेंस काइंड ऑफ, यस, मतलब ये सब तब देते हैं जब हम क्योर नहीं कर पाते, तो एटलीस्ट वी ट्राई टू गिव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ टू द पेशेंट. Now that you said that alcohol and tobacco is the major culprit. Without tobacco, मतलब tobacco free smoking. Yes. Tobacco as such is the thing, लेकिन अगर smoke जो produce हो रहा है, even that is carcinogenic. Right. रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर जो बात करेंगे ना, वो जो निकोटीन वाली है, वो इट इज उसमें कुछ नहीं होता. No, not that. So हाँ. In cities now that other option is available for people and they are. Yeah. वो उसका नहीं. Even see any form of smoking, any form of alcohol, it is not risk free. Okay. So risk तो है ही उसमें. Okay. वैसा है. I came across two terms. One is called HPV and another one is called EBV. Yeah. So please explain that. So HPV and EBV are two cancer causing viruses. Two of the most common cancer causing viruses. So the one HPV means human papilloma virus and EBV is Epstein-Barr virus. ओरल कैंसर के काफी कॉजेस में से एक HPV भी आता है. नॉट दैट कॉमन इन इंडिया, बट इट इज वेरी कॉमन इन द वेस्ट में दे डोंट च्यू टोबैको लाइक अस, सो उनके ओरल कैंसर इज मोस्टली बिकॉज ऑफ आइदर सिगरेट्स और ड्यू टू HPV. एंड हमारे इधर पे टोबैको इज फार मोर कॉमन. लेकिन जो नॉन टोबैको च्यूअर होते हैं जिनको कैंसर आता है, वन ऑफ द रीजन इज HPV. And on the positive side, HPV related cancers are well sensitive to radiotherapy. Okay. तो रेडिएशन से उनका अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है. ईप्स्टीन बार वायरस जो EBV बोलते हैं, उसमें ज्यादा इट इज मोर आई थिंक लिम्फोमा या वैसे कुछ कॉज करता है. एंड ओरल कैंसर में उतना उसका ज्यादा रोल, आई डोंट रिकॉल दैट देयर मस्ट बी एनी रोल फॉर दैट. Now pollution is another very. Pollution. Yes. Okay. It's quite a bigger worry point, and all of us are going through it, especially people from the big cities and metro cities. Now, will that cause some sort of a dangerous situation because constant exposure to the smoke and pollution? Definitely. So pollution, देखिए, smoke जो है, it is like a person is smoking. मेरे जैसा आदमी who does not smoke, लेकिन मैं अगर दिल्ली की हवा में विंटर्स में खड़ा रहूं 1 घंटे के लिए, इट इज इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग लाइक 20 cigarettes
30 सिगरेट्स कुछ मतलब ऐसा एक रेट है, किसी ने निकाला भी था एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए. Yes. सो पॉल्यूशन, बिकॉज जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं दे आर माइक्रोफाइन पार्टिकल्स, तो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वो यहाँ पे डिपॉजिट होने से ज्यादा नीचे जाके लंग में डिपॉजिट होते हैं. सो लंग कैंसर का रिस्क उसमें ज्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम नेजल एंड साइनस, मैक्सिलरी साइनस ट्यूमर्स का रिस्क उसमें काफी रहता है. During the COVID period, many people, not many, but some people face another major challenge, and which was a life-threatening, which was a black fungus, and that was very much attacking the sinus and then casually the lungs and other part. Why is that? One, and second thing, has it gone completely or still it can happen? म्यूकरमाइकोसिस, Yes. द ब्लैक फंगस. Yes. सो वो होता था, वो कोविड में क्यों इतना ज्यादा हुआ? बिकॉज पेशेंट्स जो कोविड में थे, लॉट ऑफ देम टुक स्टीरॉइड्स, बहुत ज्यादा स्टीरॉइड्स, क्योंकि कोविड इन्फ्लेमेटरी रीजन होता था. सो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टीरॉइड्स और सब लोग लेते थे, और वो स्टीरॉइड्स की वजह से आपका पेशेंट्स का लोकल इम्यूनिटी फॉल डाउन हो गया, और इम्यूनिटी फॉल डाउन हुआ उसकी वजह से ये जो म्यूकर है, म्यूकर इज इन द एयर, जो ये फंगस है ये एयर में रहता है. सो ये जनरली हमको अफेक्ट नहीं करता बिकॉज अवर इम्यूनिटी इज गुड इनफ. बट इन दीज केसेस स्पेशली डायबिटिक्स, कुछ डायबिटिक्स है जिनको स्टीरॉइड्स मिले, या डायबिटिक्स है जिनका डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, या नॉर्मल पेशेंट्स जिन्होंने हाई डोज ऑफ स्टीरॉइड लिया. सो उसमें इन दिस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेटस उन्होंने ये म्यूकर का इन्फेक्शन हुआ. ठीक है. So that is the reason for mucormycosis. Mucormycosis, when we studied all the way back in third MBBS, तो हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस है, कि डायबिटीज है, HIV एड्स है, ऐसे पेशेंट्स में होता है. कोविड में इतना ज्यादा हुआ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ स्टीरॉइड्स, और इतना पोस्ट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में बॉडी का इम्यूनिटी भी लो हो गया था. सो वो पूरा नोज में से एंट्री लेता है, सो पूरा लोकली डिस्ट्रक्टिव था वो. Okay, and your next question is उसका कैंसर से कुछ रिलेशन नहीं है. But what I'm saying is, now as you explained that it is there, but it is not so commonly attacking if everything is okay. So that is understood. We will open for question and answer, but before that, my last question is. Let me थोड़ा just एक last एक section मैंने रखा था. Sure, it is for misconceptions. Sure. So yeah, so there are a lot of misconceptions when it comes to cancer. इतने ज्यादा, मतलब 4.5 years of working in oncology, मैं अभी भी शायद खत्म नहीं हुए हैं जानने. So one of the biggest misconception is that cancer is an infection, and this is like अगर for us we might feel कि okay it's like a joke, cancer infection थोड़ी होता है, लेकिन I know grandfathers and grandmothers who have been cut off from their families because of cancer. कैंसर है तो आप सेम थाली में खा नहीं सकते हो, आप सेम रूम में रह नहीं सकते हो, आप आपके ग्रैंड डॉटर से और आप आपके फैमिली वालों से टच भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज दे थिंक कि ये छूने से फैलता है. So let me clarify this. नहीं है. It is not contagious. Cancer is not an infection. It does not get transmitted from a person to person. Second, sugar intake has no relation with cancer. Once again, ये बहुत पेशेंट्स ने मुझे पूछा है कि शुगर खा सकते हैं? हाँ, खा सकते हो. If you eat a lot of sugar, you will have probably diabetes and heart problems. वो अलग है, लेकिन कैंसर नहीं होता है. Okay. But then at the same time, I would add to this is these comorbidities make it difficult if at all we get into that's a completely separate thing. लेकिन what people think is कि लाइफ लॉन्ग आप शक्कर नहीं खा सकते. ऐसा नहीं, इससे कैंसर नहीं होता है. अच्छा, थर्ड, अब ये 110% everybody who is watching this would have heard of this.
अगर आपके इधर कभी एल्कलाइन वाटर का सेल्समैन आया है तो वो 110% बोलेगा ये पीने से कैंसर नहीं होता है। मुझे भी बोला है, मैंने बोला भाई मैं ही इसका डॉक्टर हूं। तो ओके, सो देर इज दिस अगेन, वो लोग बोलते हैं एल्कलाइन वाटर बिकॉज कैंसर सेल्स आर एसिडिक एंड इफ यू ड्रिंक एल्कलाइन वाटर दे आर नथिंग। एल्कलाइन वाटर के उसके खुद के एडवांटेजेस रहेंगे, डेफिनेटली, आई एम नॉट negating that. But it's not a protection from. It is not a protection from cancer. Please don't fall for that. अगर आपको लेना है definitely लीजिए. It has a lot of benefits, but cancer is not one of the benefits. Okay. Next is you can eat all you want after surgery. सर्जरी के बाद बहुत बार लोग हमें बोलते हैं कि खट्टा नहीं खा सकते क्या? ऐसा कुछ नहीं है, खा सकते हैं। ओरल कैंसर में यू कैन नॉट ईट ऑयली स्पाइसी स्टफ, तीखा तला मत खाओ बिकॉज बर्निंग सेंसेशन होता है, पेन होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ईट एनीथिंग, देयर इज नो डाइटरी रेस्ट्रिक्शन। मैं इनफैक्ट डे 7 पे आई मेक द पेशेंट ईट रोटी सब्जी ऑल्सो इन आवर पेशेंट्स। अगर सब पूरा हीलिंग अच्छे से हो गया है माउथ का तो हम रोटी सब्जी खिला देते हैं उन लोगों को और फिर घर भेज देते हैं। सो यू कैन ईट एनीथिंग यू वांट, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द कॉमन मिसकंसेप्शंस दैट आई केम अक्रॉस। अगर आपको ऐसा कभी सुनते हो यू कैन ऑलवेज पिंग मी समवेयर एंड आई विल से कि ये सही है कि गलत है। करेक्ट। You are dealing with lot of people, so you come across lot of surprises and queries. मैं some things that even मैं भी बहुत बार ऐसे सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि ये भी अच्छा ये भी चीज है क्या ऐसी कोई। So thank you very much for your time, and I think we'll have another session to talk about more for post-surgery precautions, so that we can remove all the myths and misunderstanding that people have. Definitely. Thank you for your time, doctor.